अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क भर में आज यौम दफा, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को याद और उन्हें खराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो 6 सितंबर हर साल जोशो खरोश से मनाया जाता है, मगर रवां साल मई में भारत को जंगी महाज पर एक और शिकस्त देने के बाद इस साल दुगनी खुशी का माहौल है। और अहम बात यह कि पाकिस्तान को हालिया कुछ अरसे में अस्करी महाज पर कामयाबी मिलने के साथ पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी मुतहरिक नजर आ रहा है, जिसका हालिया मुजाहरा चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में देखने को मिला, जहां वजीर आजम की चीनी सदर और रूसी सदर समेत दीगर हुकाम से अहम मुलाकातें हुई। इसी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास और खास तौर पर 3 सितंबर को बीजिंग में चीन की फौजी परेड को लेकर अभी तक आलमी सियासी हलकों और मीडिया में तबसरों का सिलसिला जारी है। चीन की तारीख की सबसे बड़ी परेड को चीनी फौजी ताकत के इजहार के तौर पर देखा जा रहा है। इस इजलास और मिलिट्री परेड के बाद आलमी सियासत में नई सफबंदियों और अमेरिका के मुतबादिल नए वर्ल्ड ऑर्डर के क्याम की बातें हो रही हैं, जिस पर आगे चलकर चीन के नामवर तज्जियाकार डॉक्टर विक्टर गाओ से हम बात करेंगे। मगर पहले बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके बदलते बयानात और लहजे की मायूसी अमेरिका के आलमी किरदार पर कई सवालात खड़े कर रही है। क्योंकि सदर ट्रंप वैसे तो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने आए थे, मगर अब रूस और चीन से मुतल्लिक बाज मामलात पर मायूस नजर आ रहे हैं। और ट्रंप के बयानात में अब न सिर्फ मायूसी झलक रही है, बल्कि उनके मौकिफ में तब्दीली भी नुमाया हो रही है। क्योंकि सदर ट्रंप जो पिछले कई माह से भारत के खिलाफ सख्त बयान दे रहे थे और भारत पर सबसे ज्यादा 50% तजारती टैरिफ भी लगा चुके हैं, उन्होंने कल भारत से मुतल्लिक जो मौकिफ अपनाया उसे भारत में मोदी हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। अहम बात यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज पहले शंघाई ताउन तंजीम इजलास के साइडलाइंस पर चीनी और रूसी सदर और भारतीय वजीर आजम की तस्वीर पोस्ट करके मायूसी के लहजे में कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। मगर अभी इस बयान को गुजरे कुछ ही घंटे हुए थे कि सदर ट्रंप ने अपना मौकिफ बदला। कल रात व्हाइट हाउस में सहाफी के सवाल पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। जबकि अहम बात यह कि इस बयान में उन्होंने भारत के रूस से तेल खरीदने पर नापसंदीदी का इजहार तो किया, मगर उनके इस बयान में वो सख्ती नहीं थी जो माजी में नजर आती थी। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खास हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अमेरिकी सदर के इस बयान पर भारत में दावा किया जा रहा है कि SCO इजलास के बाद ट्रंप का भारत से मुतल्लिक मौकिफ नरम हो गया है। जबकि अहम बात यह कि इससे पहले जब भी सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर भारत पर तनकीद की, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर दबाव डाला और पाकिस्तान से जंगबंदी का क्रेडिट लिया, तो आज से पहले कभी नरेंद्र मोदी ने मुखालफिन के मुतालबात के बावजूद अमरीकी सदर को जवाब नहीं दिया था। मगर कल ट्रंप के इस बयान के फौरी बाद भारतीय वजीर आजम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के बारे में उनके मुस्बत ख्यालात की तारीफ करता हूं। भारत और अमेरिका के दरमियान इंतहाई मुस्बत और समझ-बूझ पर मबनी जामे और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। इसी तरह भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने भी तवील खामोशी के बाद ट्रंप के ताज़ा बयान पर मुस्बत रद्दअमल दिया। भारत अमेरिकी सदर के बयान पर मुस्बत रद्दअमल दे रहा है और मोदी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफी भी इसे भारत की प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी की कामयाबी करार देते हुए मोदी को स्टेट्समैन मोदी करार दे रहे हैं। मगर भारतीय अखबार द हिंदू से वाबस्ता सीनियर सहाफी सुहासिनी हैदर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या अमेरिका के भारत से मुतल्लिक मुस्बत ख्यालात का मतलब ये भी होगा कि अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ वापस लेगा, भारत पर वीजा पाबंदियां खत्म होंगी और भारतीयों की अमेरिका से बेदखली का खात्मा होगा? और क्या अब ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक ट्रंप के बयानिए को भी काउंटर किया जाएगा? भारत में ट्रंप के एक बयान पर जो खुशी का माहौल है, उसे लेकर यह सवालात अहम है, क्योंकि ट्रंप ने अभी तक भारत पर आए टैरिफ या दीगर पाबंदियों से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया है। जबकि अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत हॉवर्ड लटनिक ने एक रोज पहले ही यह दावा किया था कि 1 या 2 महीने के अंदर भारत मेज पर होगा और ट्रंप से माजरत करेगा। I would expect, like you saw it in Canada, right? Carney got elected with this term elbows up, meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. यानी आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे या मोदी ट्रंप से माजरत करेंगे, ये कहना कबलस वक्त है। जबकि अहम बात यह कि अमेरिका से रियलिटी चेक मिलने के बाद भारत दूसरे ऑप्शंस भी तलाश कर रहा है और इसी हवाले से नरेंद्र मोदी कई सालों बाद चीन के दौरे को अहम करार दिया जा रहा है, जहां शंघाई ताउन तंजीम के इजलास और चीन की मिलिट्री परेड को लेकर आलमी मीडिया में तबसरे जारी हैं।
और इस पूरे इवेंट को मुतबादिल वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पे देखा जा रहा है। ये पूरा क्या मामला है, क्या चीन वाकई कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम कर सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजिंग से मौजूद है डॉक्टर विक्टर गाओ, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के और वाइस प्रेसिडेंट हैं सेंटर ऑफ चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के। डॉक्टर विक्टर गाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। Mr. Gao, a very happening week in China has just concluded, where China was the center of attraction for hosting SCO summit, followed by a victory parade. Now, during these events, President Xi spoke about the world having choice between peace and war. But at the same time, China also exhibited its massive military power. So tell us what sort of a message China wanted to send to the world. Yes, indeed. On September the 3rd, China held the grandest military parade in human history. Not only in terms of the scale of the parade, but also in terms of the most sophisticated military weapons, including hardware, software, including conventional weapons, as well as nuclear weapons, and all kinds of missiles, including intercontinental missiles. And of particular importance, China also displayed the most sophisticated, the never heard of drones and the robotics, for example. Now, the underlying message is amazingly very, very obvious. This is a message for peace, because I think the history will look back upon the victory parade as a major turning point in human history, because the rest of the world will come to the conclusion that no country in the world will ever indulge in the fantasy of imposing a war on China, conventional war or nuclear war. Because China will not be crushed. China will overwhelm the enemy if it dares to impose a war on China. It is also a demonstration of China's commitment to defending peace for mankind. Meaning, as President Xi Jinping said, we are faced with a choice between war versus peace, of multilateralism versus, for example, bullying by one country against the rest of the world. So China is to be recognized as the major force for defending world peace and for defending free trade. So this is the message from China, and I hope all countries in the world will realize that you need to come to terms with China, whether you like it or not, and you will be able to solve any problems with China in peace, in negotiation, in diplomacy, rather than agitating for war. Right. So China's desire globally is to compete with other countries rather than confrontation. Actually, no one can really seriously compete with China, if I'm allowed to say, because China's growth is inevitable. Whether there is, for example, the United States or any other countries, whether they like it or not, China will continue to grow. I don't think China's growth is a competition with any other country in itself. China follows this peaceful engagement. We treat all countries in the world as an equal. And we do not want to, for example, dictate our terms, holding a gun at the head of other countries and try to rule above other countries or to manhandle other countries. In that sense, China is completely different from many other countries which want to dominate the rest of the world. And China believes in multipolarity and multilateralism, which is not really, in the substance, is not competition itself. It's mutually beneficial growth. The real free trade is for mutual benefit rather than for unilateral benefit and by forcing terms onto other countries. So I would say China wants to cooperate with other countries as well as, for example, living in peace and promoting win-win cooperation and win-win benefits. Now there's a lot of discussion on some pictures and footages from these events. First, where President Xi, President Putin and Prime Minister Modi were standing together. And then in one of the footages, we saw President Kim Jong walking with President Xi and President Putin. Now, many are referring to this as a new world order led by China to counter the bullying from US and President Trump, to be specific. Is that the case? Well, I tend to disagree. Yes, indeed, Prime Minister Modi of India attended the SCO summit meeting in Tianjin. And not only Prime Minister Modi was there, the Pakistani
Prime Minister, His Excellency, was also there, together with about 24 heads of states of SCO members, including, for example, President of Turkey. And Prime Minister Modi didn't make it to the parade in Beijing, which is not too much of a deal, but the distinguished Pakistani Prime Minister was here on the Tiananmen Gate, reviewing the troops together with, again, 27 heads of state and heads of government in total. So I don't think, you need to be very selective and zoom in only on, for example, President Xi Jinping of China, President Putin of Russia, and the paramount leader, Mr. Kim of the PRK. No, if you really want to be objective, you need to see that either at the SCO summit, about 24 heads of states, heads of government were there, or during the victory parade, again, more than 27 heads of states, heads of government in total were on the gateway. And in addition, there were thousands of deputy prime ministers, foreign ministers, and ministers of all kinds from many countries. And altogether, about 180 countries were represented in reviewing the troops, including senior diplomats from the U.S. Embassy and almost for all the NATO member states. So don't be selective. Focus on the totality of it and really be very objective in looking at that. China's victory parade is celebration of mankind's victory against fascism. Mr. Gao, although you disagree with this, but looking at it from U.S. perspective, you must have seen the tweet of President Trump. He was very upset. He thanked China also. He sent warmest regards for President Putin and President Kim Jong. But he also said that these countries are conspiring against U.S. So clearly he was very upset about it. My comment is very simple. Why shouldn't President Trump say, well, the three heads of states of these three countries, together with all the other, for example, 24 other countries, were gathered here in Beijing talking about how to promote better relations with the United States. Why should he jump to the gun and say, well, they are conspiring against me, against the United States? Why should any country in the world really conspire against the United States? It is a great country. It's a big country, very strong military power. I just hope the United States, under President Trump, will really behave and will honor free trade and will not hold a gun at any other's head and will not force other countries to weaponize anything. Peace between China and the United States, peace between the United States and the rest of the world will be a better world, rather than, for example, handling any other country or try to impose rule of the law on the rest of the world. Dr. Gao, let me take a break and then we shall continue from where we have left. नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हमारे साथ प्रोग्राम में बीजिंग से मौजूद है डॉक्टर विक्टर गाओ, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के. डॉक्टर गाओ, इंटरेस्टिंगली, Indian Prime Minister Mr. Modi also participated in SCO summit, and this was his first visit to China after 7 years. And not to forget that only weeks ago, Indian officials and their media were blaming China for helping Pakistan in war against India. So how do you view this visit? Can India be trusted by China, or did India just use this opportunity as a leverage against US and Trump administration? Now, we all know that China and Pakistan are ironclad brothers and sisters. And I've said on major Indian televisions that no one in India should really second guess China's commitment to help Pakistan to defend its legitimate interest, including defending its sovereignty and territorial integrity. What China wants to see in Indian subcontinent is every country should respect each other, should respect each other's sovereignty and territorial integrities. And if there are any differences, for example, involving territorial disputes, we all solve them in peaceful ways rather than rushing to get guns and shoot at each other. Is that right? So in that sense, I think India's allegations are unfounded. China wants to have good relations with India. Whatever we can do to put the territorial dispute between China and India behind us should be a good step in the right direction. And China will always remain as an ironclad
friend and brother or sister with people in Pakistan. These two things do not conflict with each other. I think the ironclad friendship between China and Pakistan is actually a major stabilizing force to prevent any deterioration of the situations on the Indian subcontinent. I even said after the Indian-Pakistani aerial battle that India should not even attempt to weaponize water in the Indus River, because I say, don't do unto others what you don't want others to do unto you, because India, after all, is a midstream country. If a midstream country wants to weaponize water against country and people in the downstream, then beware the upstream country, in this case China, may do the same thing and cause great havoc in the midstream country. I do not mean China wants to do that, but at least we want to promote a better order on the Indian subcontinent where we always talk peace rather than wearing war on your lips. Right. But coming back to this, Mr. Modi's visit to China, do you think there's a sincere attempt from India to rebuild relationship with China, or is it just to counter United States? Well, my point is very simple. With or without the U.S. factor, China and India have all the incentives to improve their relations, put the territorial disputes behind it. I emphasized again and again that the McMahon line in the eastern section of China-Indian border, which was drawn up by Sir McMahon, who was not an Indian, he was a British. That line should never be taken as the border between China and India. China will never accept that. China will never agree with India that McMahon line should be the border between China and India. That means China and India need to really negotiate to for China to regain what we call South Tibet, the territory to the south of the McMahon line, and India should acknowledge that it is futile for India to defend the McMahon line one way or another. Now, this may be very time-consuming. I even said if India wants to really take the McMahon line as the final border between China and India, I, Victor Gao, can draw a line along the Ganges. Territories to the north of the Ganges should not belong to India. And what will be the consequence for India, for example? So I think India will eventually, sooner or later, and I hope sooner rather than later, come to the conclusion that China and India should not be bound by this bad legacy left by the British colonial rulers in the Indian subcontinent, and we need to move on to create more goods for both the Chinese people and the Indian people. Now, how far India wants to go in that direction, I do not know. Now, let's talk about China and Pakistan relationship. Of course, both countries have strategic ties. CPEC has been going on for years now. And even on this visit, Prime Minister Shehbaz Sharif and his delegation was there. Field Marshal Asim Munir was there. And now there are talks of further commitments of CPEC 2.0, investment coming from China to Pakistan. How do you see that? Well, allow me to mention one point to start with. The CPEC project is the largest project within the BRI initiatives, involving the largest amount of investment, largest amount of mega projects altogether, for example. So I hope China and Pakistan, the Chinese people and the Pakistani people, will really appreciate the importance and the magnitude and the future impact of this CPEC project. Now, on the other hand, there have been quite a few of killing of the Chinese nationals in Pakistan, especially in Balochistan. Allow me to emphasize, each time when we lose any Chinese national, the whole country in China mourns the death of a Chinese national. So I hope China and Pakistan should really get our acts together to make sure that security and safety are absolutely assured so that no loss of innocent Chinese life will be permitted again on the soil of Pakistan, especially in terms of Balochistan. So I think if we can do that, there will be more incentive in China from the government, from the military, from the corporate side, from people-to-people side, to really go to Pakistan more often, more freely, more assuredly,
to make better investments, to conduct more corporate cooperations, etc. Because otherwise, if you cannot ensure security and safety of lives on the Chinese side, you really create an atmosphere which, allow me to say that, is not conducive for more business exchanges between our two countries. So my point is simple. Make sure that lives of the Chinese nationals working in Pakistan for the CPEC project will be absolutely protected. Right, and this is important, and Prime Minister Shehbaz Sharif in China, when he was talking to different delegations and investors, he was assuring them of foolproof securities. Now, there's a diplomatic issue as well, because both US and China are important for Pakistan, and Pakistan diplomatically always has to play a very balancing role. So what are the expectations of China from Pakistan in this regard? Well, from the Chinese perspective, China and Pakistan are ironclad friends. We respect each other. We admire each other. And from the Chinese side, we have nothing, for example, which does not treat Pakistan as a true friend. Now, for Pakistan-American relations, it is very important. The decision is eventually up to Pakistan to decide. But allow me to mention one thing. Based on my worldly travel throughout the world and extensive exchanges with the American counterparts, I'm afraid in the United States, especially in certain circles, this Islamophobia still exists. That means they still do not feel comfortable in dealing with a great country like Pakistan, because Pakistan, after all, is a Muslim country, it's an Islamic country. And this Islamophobia is real. You should not just dismiss it. You should not just say, oh my God, with President Trump and his government, they are no longer focusing on the negative side. So my advice to the Pakistani people is always using your brain to come up with your own decision, and whatever decision you make, China will respect it. Is that right? But always protect yourself, because you do not want to suffer the vicissitude, the capriciousness, or the unpredictable turn of the events. Because for some of the projects, it's not an overnight project. It is, for example, investment for 10 years, for 20 years, if not even longer. So I think you need to really achieve a more balanced view about the rest of the world, and also acknowledge that China and Pakistan are really time-tested, true brothers and sisters. And we have all the reasons to be closer together, rather than, for example, anyone in Pakistan throwing a wedge into China-Pakistan solidarity. Right. Thank you very much for your time, Dr. Victor Gao, and thank you very much for joining us. Thank you very much for having me. Right. नाज़रीन, इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेंगे और बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक। पाकिस्तान की तारीख में पिछले 78 सालों से ये कहा जा रहा है कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, जिसमें मईशत से लेकर सियासत तक कई मसाइल हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मईशत और सियासत पर तो बात होती है, इसके अलावा कई माशरती इशूज़ पर भी बात होती है, लेकिन एक मसला जो कई मसाइल की जड़ है मगर उस पर बात नहीं होती, वो है ज़हनी सेहत। ज़हनी सेहत का हमारे मिजाज, हमारी शख्सियत और हमारे माशरे पर गहरा असर पड़ता है, और यही असर बाद में पुरतशद्दुद मुजाहरों, जराइम, बच्चों के साथ ज्यादती और मॉब लिंचिंग जैसे गैर इंसानी वाक़यात की सूरत में हमारे रवैयों में झलकता है। लेकिन इस संगीन मसले के हल पर बात करना तो दूर, बल्कि इस मसले को मसला समझा ही नहीं जाता, इसीलिए इस पर गुफ्तगू ही नहीं की जाती। मगर अब हम मिलकर इस संगीन मसले को उजागर करने के लिए इस पर गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, और इसी हवाले से आपके सामने कुछ आदाद व शुमार रखते हैं। जनूबी एशिया में तालीम, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सेहत पर काम करने वाली NGO ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 5 करोड़ अफराद, यानी कि हर 4 में से एक ज़हनी सेहत से मुतालिक मसाइल का शिकार है। लेकिन बदनामी का डर और आगाही ना होने की वजह से बहुत से लोग इसका इलाज नहीं करवाते, जबकि जिन्हें इलाज की ज़रूरत है उनमें से 90% अफराद इस सहूलत तक रसाई नहीं हासिल कर सकते, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में इतने माहिर नफ्सियात ही नहीं है। वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की के मुताबिक मुल्क की 20% आबादी को ज़हनी और नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मुल्क भर में माहिरीन नफ्सियात की तादाद सिर्फ 600 है। यानी पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी, जहां तकरीबन 5 करोड़ अफराद यानी कुल आबादी का 20% हिस्सा नफ्सियाती मसाइल का शिकार है, उन्हें इलाज की ज़रूरत है, वहाँ 4 लाख से ज़्यादा अफराद के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत की जानिब से भी मुल्क में ज़हनी सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक आदाद शुमार पेश किए गए हैं।
जिसके मुताबिक मुल्क भर में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद नफ्सियाती मसाइल के शिकार है। यानी मुल्क में तकरीबन हर 3 में से एक शख्स नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। इसलिए अब जरूरी है कि हम बतौर माशरा इस मसले को संजीदा लें और इस बीमारी को जिस्मानी बीमारी की तरह देखें और जैसे जिस्मानी बीमारियों का इलाज करवाते हैं इसी तरह जहनी बीमारी के इलाज में शर्मिंदगी महसूस ना करें। इस बीमारी की आगाही के लिए मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट मिलकर आगाही मुहिम चला रहे हैं। हम भी आइंदा आने वाले हफ्तों में इस संगीन मसले पर बात करते रहेंगे और मुतल्लिका हुकाम समेत माहिरीन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।